I hope you guys will be fine. And today is our third lecture on lasers. Let's see what we have today. Light amplification. This light amplification is very important in a laser, and this light amplification we can only get by stimulated emission. And the most important thing in stimulated emission is that we can increase the intensity and can make the light a uniform, coherent and monochromatic. So लेट्स एक्सप्लेन इट विद दिस फिगर. सो इस फिगर में ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है. तो ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है. जब एक फोटॉन आता है तो वो इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को डी एक्साइट करता है, लोअर स्टेट में लाता है. तो जैसे ये लोअर स्टेट पे आता है तो वो अपना एक फोटॉन एमिट करता है. लेट्स सपोज कि ये वाला जो फोटॉन है ये वही वाला फोटॉन है जिसने इसको डी एक्साइट करवाया, और ये वो फोटॉन है जो कि इसको डी एक्साइटेड करवाने के बाद एमिट हुआ है. तो अब ये वाला जो एक्साइटेड जो स्टिमुलेटेड फोटॉन है ये एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में ये वाला फोटॉन आया था. तो इसी वजह से हमारे पास लाइट क्या हो जाती है, यूनिट डायरेक्शन हो जाती है. तो अब ये जो दो फोटॉन है मजीद दो इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट करेंगे, और इस तरह से हमारे पास चार मजीद फोटॉन आ जाएंगे, और ये वाले भी एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में ये जो पीछे वाले दो आ रहे थे. तो इसी वजह से एक तो डायरेक्शन स्टेट होती जाती है जो भी न्यू फोटॉन एमिट होता है, और दूसरा ये चेंज डायरेक्शन है, फोटॉन की जो तादाद है वो इंक्रीज होती जाती है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइट एम्प्लीफिकेशन लेज़र लाइट में. इस तरह से लाइट की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है और ये मल्टीप्लाई होती जाती है. ओके, स्टेडी स्टेट कंडीशन. तो ये क्या कंडीशन होती है? जो स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है इसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन बैलेंस होना चाहिए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के. और इसको इक्वेशन इस तरह से दिया गया है कि spontaneous emission and stimulated emission are either rate of spontaneous emission or rate of stimulated emission, they are in a balance with the rate of absorption. और यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी गई है ये हमने लास्ट लेक्चर में इनको देखा था. ये रेट इक्वेशन से आई थी हमारे पास. ओके, अगर इसको इस फिगर में देखें स्टेडी स्टेट कंडीशन को, इस फिगर में ये है कि हमारे पास अगेन टू एनर्जी लेवल सिस्टम है. ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है. फर्ज करें कि हमारे पास दो फोटॉन्स हैं. ये इंसिडेंट फोटॉन है. सो व्हेन दिस इंसिडेंट फोटॉन्स फॉल ओवर हियर, सो of course two electron will be excited to the upper state. Okay, so the two electrons have been absorbed. Next, what happens after passing a time over here? One of the electron will come up to the lower energy state and it will emit a photon. So this is spontaneous process. So we have absorbed two photons, and from these two photons one has came up by spontaneous emission. So this emitted photon, it will cause a stimulation for the excited electrons to come up to the lower energy state. When it will come to the lower energy state, then it will emit another photon. So this is the stimulated emitted photon, and this one is spontaneous emitted photon, and both will move in the same direction. So what we have seen that this process has absorbed two photon and it has released two photon as well. One in the case of spontaneous and another in the case of stimulated. So therefore this process is steady state process because rate of spontaneous plus rate of stimulated is in a balance with rate of absorption. Okay, now we see a relationship between Einstein coefficient. So we just take a further step.
to find out this relationship between Einstein coefficient, we have to use steady state condition, and we have already seen in a previous slide what is steady state condition. Uh, this steady state condition happens when rate of spontaneous emission and the rate of stimulated emission are in a balance with the absorption. So we can place these equations because we have already find out these values in our second lecture. If you have done our second lecture very well, then you will be able to understand the relationship between Einstein coefficient, because this lecture is pretty related to our previous lecture. Okay, we have find out these values. This actually this rate of stimulated rate of any rate equation of any process, it's depend on the population, and here we have written down the population and as well as incident intensity of the incident photons. Okay, anyway, here this A21 and B12 and B21, they are Einstein coefficients, and these are related to the different process. Okay, so what we have next? So in from this equation, we will come up to this equation, and in this equation we have bring all the B coefficient of the Einstein coefficient to the one side of the equation and the other A coefficient to the other side. So we have brought this one up to here, and this will remain exactly at that place. So this is intensity of the incident photon. It will remain over here. Now we are going to bring this to the down of that equation. So we will get like that. Okay, over here they are going to take a common. This is B12 when we take a common B12. So this will equation will come up, and this will and also going to divide this n to 1, so we will get like this. Just take a just going to take a common stuff over here. It's not so difficult. If you guys feel any difficulty, you can contact me. Okay, next. So in a previous slide, we have taken out the intensity of the system that is in a steady state condition, and during this system we will get electromagnetic radiation, and we have observed that the the electromagnetic radiation that we get during this laser system, these are almost identical to the intensity of uh, electromagnetic radiation that we get in a black body. So we can correlate with the intensity of this laser system with the intensity of black body radiations. So this is intensity for the black body radiation, or we can say that Planck's law of radiation. So this is the intensity, and in a previous slide we have the intensity for steady state for laser system. So both are the intensity. So we can compare the equation number 1 that we have in a previous slide and this equation number 2 that we have over here. Just we are going to compare over here just by the comparing, and we can say that these two systems can be equal to each other if if stimulated emission is equal to spontaneous absorption. This is for stimulated uh, emission coefficient, and this is for absorption. So these two terms can be equal to each other if these two probability rates are equal. Then just we are going to replace this B21 with the B12. So this will equation come up like that. Okay, let's see what we have on the next slide. Just we will just simplify this equation more. And we have already read in our
first lecture that relative population we get outcome like that. So we will replace uh, our n1 over n2 with this h mu over kt with the explanation. So this equation will become like that, and from that equation we have this term uh, to that side of the to the equation, and we also have to the other side, so these will be cancelled out. Now we get equation like this. So this equation give us a relationship between spontaneous emission and absorption and spontaneous stimulated emission. Now this is not for absorption, this is for the spontaneous emission and stimulated emission. Okay, we have got these two relationships, and this relationship also tells us that here we have frequency, and this frequency is in cubic power. If this frequency increases a lot, so this stimulated emission rate decreases. Therefore they say that it is difficult to achieve laser action at higher frequencies, because it will increase very high, and the probability for spontaneous decreases. Okay, this is a very important topic, and it tells us the relationship between Einstein coefficient, and it also tells us about the probability how much laser action can take place or not, and with what ratio. And in our next slide we will also see what are the conditions for the laser light to come up, and let's see what we have. Okay, the condition for high stimulated emission, and we have already studied that laser light is only possible by stimulated emission. अगर स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होता तो हम लेज़र लाइट कभी भी अटेन नहीं कर सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस एमिशन ही मिलता रहेगा, और स्पॉन्टेनियस एमिशन से कभी भी लेज़र लाइट अमिट नहीं होती, और स्पॉन्टेनियस एमिशन से हम आम सिंपल बल्ब वाली लाइट तो अटेन कर सकते हैं जो यूनिडायरेक्शन नहीं होती, लेकिन लेज़र लाइट कभी भी हासिल नहीं की जा सकती। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द एब्जॉर्प्शन एंड स्पॉन्टेनियस emission always occur together when stimulated emission take place, and the stimulated emission can be made larger than the absorption and spontaneous. तो जैसा कि ये है कि हमारे पास जब ये प्रोसेस हो रहे होते हैं, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड, ये सारे एक दूसरे के फ़ौरन बाद हो रहे होते हैं, और एट अ टाइम समटाइम हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो रहा होता है, और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा होता है, और स्पॉन्टेनियस भी हो रहा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि बाकी दो प्रोसेस कम हो, सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा हो, जितना वो ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमें लेज़र लाइट मिलने के चांसेस हैं। और ये स्टिमुलेटेड एमिशन को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशन है कि पहले हम देखते हैं रेशियो ऑफ स्टिमुलेटेड रेट टू स्पॉन्टेनियस रेट। तो इसमें रेट दिस इज फॉर स्टिमुलेटेड रेट एंड दिस इज फॉर स्पॉन्टेनियस रेट। ये वही दोबारा इक्वेशन लिखी गई हैं, रेट इक्वेशंस। तो इसमें हम देखें कि जो हमारा स्टिमुलेटेड रेट इक्वेशन है ये डिपेंड कर रहा है पॉपुलेशन ऑफ अपर एनर्जी लेवल E2 एनर्जी लेवल, अगर हमारे पास ये 2 एनर्जी लेवल सिस्टम है तो, और ये डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेटेड फोटॉन, और ये जो है स्पॉन्टेनियस एमिशन ये सिर्फ डिपेंड करता है पॉपुलेशन ऑफ सेकेंड एनर्जी लेवल पर। ओके, अगर ये रेशियो लिया जाए तो इसमें ये देखिए ये भी पॉपुलेशन है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन है। अब हमारे पास जो सिर्फ बचता है वो बचता है सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेटेड फोटॉन। तो अगर हमने ये हमारे पास रेशियो में है, दिस इज स्टिमुलेटेड रेट एंड दिस इज स्पॉन्टेनियस रेट, और ये हमारे पास रेशियो जो ये वाली रेशियो है वो इंक्रीज होगी अगर स्टिमुलेटेड रेट इंक्रीज होगा तो। और ये कैसे इंक्रीज हो सकता है, ये अगर हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन है अगर वो ज़्यादा हो,
अगर वो ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है स्टिमुलेटेड एमिशन हैपन हो रहा है। तो और यहाँ पे हमें तो स्पॉन्टेनियस के लिए तो हमें इसकी इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर ये होगा तो स्टिमुलेटेड होगा, अगर ये नहीं होगा या कम होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये हाई इंटेंसिटी का फोटॉन हमारे पास हो ताकि स्टिमुलेटेड एमिशन होता रहे और हमें यूं लेज़र लाइट मिलती रहे। तो फर्स्ट कंडीशन ये है। और इसको यहाँ पे नीचे इक्वेशन में इनको जस्ट फर्दर एलेबोरेट किया गया है। ये वाला जो हमारे पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था B21 और A21, ये रिलेशनशिप है बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन का। इसको जस्ट फर्दर एलेबोरेट किया गया। अदरवाइज यही है इक्वेशन ही हमें बता रही है कि स्टिमुलेटेड एमिशन को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, नॉट बाय इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इन अपर एनर्जी लेवल। जस्ट अगर हम ये रेट देखें तो तब हमें सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन की चाहिए। तो ये होगी तो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन रेट इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट। So in the next we have that rate of stimulated ratio of stimulated rate to absorption rate. So ratio of stimulated rate to absorption rate is given by like this. Here we have rate of stimulated emission and this is a rate of absorption. So we have got like that। और ये हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हमारे पास क्या होता है कि स्टिमुलेटेड एमिशन रेट और एब्जॉर्प्शन, अगर हमारे पास स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो तब ये इक्वल होने चाहिए। जस्ट इनको इक्वल किया गया और ये कैंसल आउट हो जाता है, तो हमारे पास ये पड़ती है पॉपुलेशन। तो अब ये जो रेशियो हमने देखा अब स्टिमुलेटेड का एब्जॉर्प्शन के साथ, तो हम ये कहते हैं कि हमारा स्टिमुलेटेड रेट ज़्यादा होना चाहिए एब्जॉर्प्शन से। वो कैसे ज़्यादा होगा? अगर हमारे पास ये वाला हमारे पास रेशियो है, इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा हो या कम हो तो हमें मिलेगा। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ से हमें मज़ीद दो चीज़ें मिलती हैं। अगर N1 ग्रेटर हो N2 से, यानी कि हमारा जो ग्राउंड स्टेट है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो एक्साइटेड स्टेट से। अगर वो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जब भी हमारे पास कोई भी फोटॉन आए, आइदर वो फोटॉन हमारे पास इंसिडेंट फोटॉन हो या वो स्पॉन्टेनियस एमिशन से रिलीज होके फोटॉन आए, तो वो जो फोटॉन है बजाय ये कि वो स्पॉन्टेनियस एमिशन को स्टिमुलेट करे, वो जो फोटॉन स्पॉन्टेनियस का है वो ग्राउंड स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शो कर देंगे। अगर लोअर एनर्जी स्टेट के पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो जो स्पॉन्टेनियस फोटॉन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बजाय इसके वो स्टिमुलेट कराए। तो इसी वजह से जब पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट की ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ज़्यादा होता है बजाय स्पॉन्टेनियस के। तो स्पॉन्टेनियस को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर N2 की पॉपुलेशन यानी कि एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो ग्राउंड स्टेट से, जब ये ज़्यादा होगी और नीचे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन से, वो जो फोटॉन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा बल्कि वो स्टिमुलेटेड प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। तो हमने देख लिया कि स्टिमुलेटेड प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। वो कौन कौन सी है? तो हमारे पास जो अपर एनर्जी स्टेट है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि हमने इसी स्लाइड पे देखा। और प्रीवियस स्लाइड पे हमने ये देखा कि इंसिडेंट जो फोटॉन है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी ये जो कंडीशन है N2 इज़ ग्रेटर देन N1, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है लेज़र लाइट के लिए, और इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन भी। पॉपुलेशन इन्वर्जन हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन इसको कहते हैं और ये लाजमी है स्टिमुलेटेड रेट को इन्हांस करने के लिए और एंड टू गेट द लेज़र लाइट। So again in this slide we have the condition for high stimulated emission, and we have only two conditions by that we can achieve highest stimulated emission rate than the spontaneous or than the absorption one. So the first is
The population of atom of excited level must be greater than the population of atom in lower level. So we also call it population inversion. And second, the radiation intensity in the active medium must be very large. So when the radiation intensity will be high, so stimulated emission will take place. So this topic is very important and it tells us the steps how we can get laser light by enhancing our stimulated emission to the highest level. Okay, I think this was enough for today. So take care. See you next time. Allah Hafiz.